All right, so hi everyone, a very good morning to all of you, and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover two very important schemes from the Ministry of Finance. One is Mahila Samman Saving Certificates, and another is Sukanya Samriddhi Yojana. I know most of you have covered these schemes with me in my PIB sessions, but don't worry, we are creating a government schemes. We are having government schemes special class. You are definitely going to get something extra from today's class. ठीक है, तो जिन्होंने देख लिया है वो भी देखे, जिन्होंने नहीं देखा ऑफ कोर्स उनको तो देखना ही है. एंड दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज Sukanya Samriddhi Yojana. Right. So, what is the objective of this scheme? First of all, Sukanya. Sukanya means what? Sukanya means what? Girl child. Sukanya का मतलब क्या है यहाँ पे? Girl child. Samriddhi means what? Samriddhi means prosperity. Samriddhi means prosperity or prosperous. So we want to have a prosperous future for our girl child, and that is the objective of this particular scheme. Now, how we can do that? How we can ensure the prosperous future for our girl child? By facilitating the education. And क्योंकि हमारा समाज में सबसे पहले जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो पेरेंट्स सबसे पहले उसकी शादी के बारे में सोचते हैं. सो दूसरी चीज है मैरिज एक्सपेंसेस. So this scheme ensures a bright future for the girl child by facilitating their education and marriage expenses. It was launched in the year 2015 by the Ministry of Finance, of course. Talking about the eligibility, my dear friends, if I talk about the eligibility, who can open the account, how many accounts can be opened, ये सारी चीजें अगर हम समझे, so the girl child must be below the age of 10 years first of all, right? If the girl child is 10 years or is equal to or more than 10 years of age, the account will not be opened in her name, right? Only one account obviously is allowed per child. एक girl child पे एक ही account होगा, right? एक family दो सुकन्या समृद्धि account खोल सकती है. Promoting हम दो हमारे दो of the government of India. Of course, यहाँ पे exception होगा in case of twins or triplets. ठीक है? NRIs are not eligible to open the Sukanya Samriddhi account at all. ठीक है? I hope the eligibility is clear. Now moving ahead, where can the Sukanya Samriddhi accounts be opened? Sukanya Samriddhi account कहाँ पे open किए जा सकते हैं? Now, one thing let me be very clear here. Under Sukanya Samriddhi Yojana, what government is doing actually, how the government is providing support, the support is provided through an account, right? A bank account जो कि ओपन किया जाता है. ये एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है जिसमें सरकार इंटरेस्ट रेट देती है जो भी हमारा डिपॉजिट होता है उसके ऊपर, right? And this is how the government is providing support, right? तो अब तो ये अकाउंट कहाँ कहाँ खोला जा सकता है? So this account can be opened in any public sector banks in India, any post office, and there are 3 private banks as well which are providing support in this particular scheme by opening the accounts, opening the Sukanya Samriddhi accounts. These banks are HDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank. ठीक है जी, ये तो चलो याद रहेगा आपको पब्लिक सेक्टर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, बट दिस माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. HDFC, ICICI एंड एक्सिस बैंक, राइट? नाउ कितना डिपॉजिट करना होता है पर एनम? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट द पेरेंट्स, द गार्जियंस हैव टू डिपॉजिट? So minimum amount is 250, maximum amount is 1,50,000, and the total tenure of the account, is 21 years. 21 years. However, deposits can be made for a period up to 15 years from the account opening date. ठीक है, अकाउंट जिस दिन भी ओपन हुआ उसके 15 साल तक ही हमें क्या करना होता है? डिपॉजिट करना होता है, राइट? द अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. The account will be automatic. वैसे तो अकाउंट का टेन्योर कितना है? 21 years, but the account will be automatically closed if the girl child gets married before the completion of tenure of 21 years. ठीक है, 21 साल पूरे होने से पहले पहले अगर गर्ल चाइल्ड की शादी हो जाती है तो वो जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए. Is there any provision of premature withdrawal? Yes, there is definitely a provision of premature withdrawal. So, first of all, the premature withdrawal can only be made by the girl child in whose name the account has been opened. ठीक है, अगर समीक्षा के नाम पे अकाउंट ओपन हुआ है तो समीक्षा ही प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकती है. ठीक है, बट remember, the premature withdrawal is allowed only after the girl child attains the age of 18 years
or completes the 10th standard whichever is earlier. या तो 18 साल की हो जाए या 10वीं कंप्लीट हो जाए, दोनों में से जो काम पहले हो जाएगा, then she can prematurely withdraw from the account, right? Also, premature withdrawal is limited to 50% of the balance that was at the end of the preceding financial year. For example, we are in the financial year 2025-26, and let's say on 31st March 2025, that is the end of the previous financial year, the any Sukanya Samriddhi account has, let's say, rupees 1 lakh, right? So 50% of 1 lakh, which means 50,000 rupees will be allowed in case of premature withdrawal, right? And maximum one withdrawal per year is allowed up to 5 years. ठीक है, मैक्सिमम 5 बार ही विड्रॉ किया जा सकता है 5 सालों में, और साल में एक बार का ही मौका मिलेगा. ऑलराइट, चलिए, क्या अकाउंट को पहले क्लोज किया जा सकता है? नहीं. वैसे तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर विद इन द फर्स्ट 5 years of opening the account. After first 5 years, however, there is a provision of premature closure, and that too in case of life threatening disease or death of the guardian. Because here we are talking about the account for a girl child, so obviously the girl child cannot contribute, right? So if the guardian dies, or if the guardian is suffering from any life threatening diseases, and that too after 5 years, the account can be prematurely closed. Okay. What if the account holder dies? What if unfortunately the girl child dies? So in event of the death of the account holder, the account will be closed immediately, and whatever balance in the account is there along with the interest shall be paid to the guardian. गार्जियन को पैसा वापस दे दिया जाएगा along with the interest. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे, डिफॉल्ट अकाउंट्स. इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि मिनिमम एनुअल डिपॉजिट जो कि है 250 रुपए, कोई अकाउंट, कोई पेरेंट, कोई गार्जियन पे नहीं कर पाया, तो क्या वो अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. The accounts failing to meet the minimum annual deposit requirement can be regularized by paying a penalty of 50 for each year of default along with the minimum contribution. For example, मान लेते 2024-25 में कंट्रीब्यूशन नहीं किया और 2023-24 में भी नहीं किया, right? Let's say there is an account in the name of X. In this account, the minimum contribution was not made in financial year 23-24 and 24-25. So how much amount will be the minimum contribution? 500, right? So this account can be regularized by paying 500 plus 50 each year. 50 each year penalty. तो एक साल की 50 यानी कि पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 100. तो टोटल 600 रुपीज देके इस अकाउंट को रेगुलराइज किया जा सकता है. ऑलराइट. And yes, the deposits which are made under the account are fully exempted from the income tax, and also the interest which are earned in this account is free from the income tax under section 10 of IT Act. यानी कि डिपॉजिट जो हम करते हैं कोई किसी इस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट किया जाता है वो तो इनकम टैक्स से फ्री है ही, साथ में अगर कोई इंटरेस्ट अर्न होगा दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकम टैक्स फ्री. ठीक है जी. I hope guys this scheme is clear. I hope there are no doubts. If you would have any doubts, you can ask me in the comment section. And what are the impacts and outcomes? क्या impacts और outcomes है? सबसे पहले तो ये सेविंग्स कल्चर को प्रमोट करता है हमारे देश में. अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगा दैट चाइल्ड मैरिज इज अ वेरी बिग एक्सपेंस, राइट? स्पेशली गर्ल चाइल्ड मैरिज. ठीक है, मतलब मैरिज इज अ वेरी बिग एक्सपेंस. ठीक है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, तो at that point पैसा एकदम से लाना is very difficult. So this particular scheme promotes the saving culture, and वो last moment का जो last moment का hue and cry create होता है पेरेंट्स के लिए, उससे बचाएगा. ठीक है. Obviously it provides support for education and marriage for the girl child. Community impact. Now what is this? So remember the villages where all the eligible girls, ऐसे villages, all those villages where all the eligible girls have this particular account, Sukanya Samriddhi account, are designated as Sukanya Samriddhi Gram, and this reinforces the community participation in the scheme. So it has a community impact, my dear friends, right? And of course it is empowering women socially and economic. ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट दोनों मिल रहा है महिलाओं को इस पर्टिकुलर स्कीम से. ठीक है, द स्कीम कंट्रीब्यूट्स टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन एंड रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज. मतलब शादी के लिए इधर उधर पैसे के लिए जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ द फैमिली रेगुलरली contributes to this particular account, then definitely they will not have to think about the expenses of their girl child.
about the expenses of marriage of their girl child. ठीक है, I hope it is clear. Let's talk about the another scheme now, that is Mahila Samman saving certificate. I hope you understand the objective. Mahila means women, of course. सम्मान तो छोड़ो, सेविंग्स मतलब सेविंग, सर्टिफिकेट मतलब सेव सर्टिफिकेट. इट इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम. It is a small saving scheme, and of course, as the name says, it is exclusively for women. And not only for women, it is also for the minor girl child. Right, minor girl child. क्या है भैया, बात करते हैं. To promote financial inclusion and empowerment of women, including the girls. Financial inclusion है, that is for sure. It was announced in budget 23-24. ठीक है. And again, what is it? How the government promotes financial inclusion under it? So under this also, Mahila Samman savings accounts. Mahila Samman saving accounts are being opened, and a particular rate of interest which is obviously higher than the savings banks account, and FD rate से भी ज्यादा है, 7.5% जो कि FD रेट से बहुत ज्यादा है. यहाँ पे कितने 7.5 है, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट की जा रही है, राइट. टेन्योर जो अकाउंट का होता है, इस स्कीम का टेन्योर एक्चुअली और अकाउंट का भी टेन्योर है, दैट इज 2 years, दैट अप टू 31 March 2025, which means the accounts could be opened up to 31 March 2025. So जिन्होंने 31 March 2025 को अकाउंट खोला है अपना, right, their account will be validated till 31 March 2027. Their accounts will be matured on 31 March 2027, right. Single holder type account can be opened by a woman for herself or by the guardian on behalf of a minor girl. If the woman is opening an account, then of course she can herself open the account, while if the account has to be made for a minor girl, then the account will be maintained by the guardian. Okay, and there is no provision of joint account here. There is no provision of joint account at all. You can see here, single holder type account can be opened. Joint account का कोई provision नहीं है. Deposits minimum ₹1,000, maximum ₹2 lakh. An individual can also open, number of accounts subject to maximum limit after time gap of 3 months between existing account and the opening of the another account. For example, let's say किसी ने 1st January 2025 को account खोला, right? So the next account can only be opened after 3 months, that is after 31st March 2025. Okay, और 31st March तो लास्ट डेट है एक्चुअली, तो डेट थोड़ी बदल देते हैं. लेट्स से किसी ने 1st January 2024 को अकाउंट खोला था, so the next account can only be opened after 31st March 2024, that is after completion of 3 months from the previous account and the opening of other account. ठीक है. Interest paid, I already told you, 7.5% per annum. The interest is compounded quarterly and credited to the account. जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कंपाउंड होता है और फिर वो अकाउंट में आ जाता है. ठीक है. क्या विड्रॉल अलाउड है अकाउंट से? प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है. यस, अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ एलिजिबल बैलेंस. कितना? 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस, बट ओनली आफ्टर 1 year from the date of opening the account before the maturity. ठीक है. लेट्स से 1st January 2024 का अकाउंट खुला था, तो 31 दिसंबर 2024 के बाद ही विड्रॉल किया जा सकता है उसमें, एंड दैट टू 40%. ठीक है. प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड है? यस, इट इज अलाउड, बट ओनली इन 2 cases. Number 1, on the death of the account holder, in case of in case of women, and in case of guardian, in case of minor, अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड है. And if there is any life-threatening disease, then also the account can be prematurely closed. ठीक है. But premature closures are not permitted within 6 months. ठीक है. जैसे again 1st January 2024 को अगर अकाउंट खुला है, तो if premature closure has to be done, then it can only be done after 30th June 2024. 6 महीने के बाद ही हो सकता है. ऑलराइट. और उसमें 2% की पेनल्टी भी लग जाएगी. इंटरेस्ट रेट कितना गिर जाएगा? 5.5%. राइट. तो आई होप दिस स्कीम इज ऑल्सो क्लियर. बस छोटी सी स्कीम थी, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल छोटी छोटी 2 स्कीम्स हैं, बट जितनी मैंने करा दी है इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज मोर देन इनफ माय डियर फ्रेंड्स. राइट. तो व्हाट आर द इंपैक्ट्स एंड आउटकम्स? सबसे पहले ऑफ कोर्स इट इज प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन
It is providing a safe savings platform for women, particularly in rural areas, right? It is empowering through financial independence. The women now don't have to depend on someone for their basic expenses, right? So it is providing kind of financial independence to the women, right? Widespread adoption है भाई इसका. By 31st October 2024, more than 43 lakh accounts were opened under this particular scheme. And of course, it is accessible and inclusive, which means there is no special criteria like caste criteria, right? Like income criteria. Any women, any girl child can open this account and have the benefits and can get the benefits of this particular account. All right. Alright guys, that's it for these particular two schemes, Mahila Samman Savings Certificates and Sukanya Samriddhi Yojana. I hope both the schemes are absolutely clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. ठीक है? And yeah, 13 तारीख को एक हमारा ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, सो प्लीज उस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना. उससे दो फायदे होंगे. पहला फायदा ये होगा कि आपको ये जानने को मिलेगा दैट वेयर डू यू स्टैंड, और दूसरा फायदा आपको ये होगा, आपको मिलेगी स्कॉलरशिप बहुत ही बढ़िया बढ़िया. ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.